Papers to be laid on the table. Sri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Arjun Ram Meghwalji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 11 in today's revised list of business. Sri Fagan Singh Pulaste. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यवाही के क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम पर उल्लेखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। General Sevanivrit V.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 3 of the revised list of business. Sri Ramdas Athavale. Respected Chairman, sir, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Sadhvi Niranjan Jyoti. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। श्री नित्यानंद राय। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 6 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्री वी मुरलीधरन। Respected Chairman, sir, with your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 17 in today's revised list of business. श्री सोम प्रकाश। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 8 in the revised list of business for today. श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची के क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखती हूँ। श्री ए नारायण स्वामी। Respected Chairman, sir, with your kind permission, I lay the papers of the table of the House mentioned at serial number 10 of today's revised list of business against my name, sir. श्री बी एल वर्मा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यवाही क्रम संख्या 11 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। श्री अजय कुमार। सभापति जी, मैं आज की संशोधित कार्यवाही में क्रम संख्या 12 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्री भगवंत खुबा। आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची क्रमांक संख्या 13 पर मेरे नाम के सक्षम उल्लेखित कागज पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री ए नारायण स्वामी। Respected Chairman, sir, with your kind permission, I lay the papers on the table of the House mentioned at serial number 14th of today's revised list of business on behalf of Sushri Pratima Bhumika, my colleague Minister of State, Minister of Social Justice and Empowerment, sir. डॉक्टर सुभाष सरकार। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची के क्रम संख्या 1 दस्तावेजों को पटल पर रखना के क्रम संख्या 15 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। नमस्कार। श्री विश्वेश्वर टुडू। Sir, if you permit, I would like to. But seek the permission according to rules. So I am told that it has been already. Told by whom? By the Minister's office. See, Vishweshwar Am I concerned with that? No, I'm here to get that. No, you have to follow the rules. If you don't follow the rules, not present. Shri John Birla. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay the paper on the table of the House as mentioned against my name at serial number 17 in the revised list of the business for today. Honorable members, the Honorable Minister of Parliamentary Affairs has proposed that the sittings of the current 263rd session of Rajya Sabha may be extended for 1 day up to
Saturday, the 10th February 2024, in order to complete essential government business. Honorable members, the matter was also discussed in the meeting of the Business Advisory Committee held yesterday, the 6th February 2024, and the members of the committee and leaders of parties present had agreed to extend the sitting of this session of Rajya Sabha up to Saturday, the 10th February 2024. There will be no 0 hour and question hour on that day. Yes. निवेदन है आपसे कि जिस दिन मैं यहाँ पर भाषण किया We'll take it up there, sir. I have a letter with me. I thought you were speaking on this point, sir. Your very detailed communication is with me, sir. I have to inform honorable members that panel of vice chairpersons has been reconstituted with the following members: Srimati Sulata Dev, Srimati Mamta Mohanta, Miss Saroj Pandey, Srimati Vandana Chauhan, Dr. Sudhanshu Trivedi, Shri Rakesh Sinha, Shri GVL Narasimha Rao, Dr. Amar Patnaik. Reports of the department-related Parliament Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, Shri Vivek K. Tankha. Honorable Chairman, on behalf of the Chairman and members of the Department of DOPT, Law and Justice and Pension, I present the following 4 reports. 141st report on the subject of judicial infrastructure in the northeastern states of India. 142nd report on the subject of strengthening of legal education in view of emerging challenges before the legal profession. 143rd report on the subject of review of the working of legal aid under the Legal Services Authority Act 1987. And 144th report on the action taken on the 133rd report of the committee on the subject of judicial processes and the reforms pertaining to Department of Law and Justice. With your kind permission, may I table them, sir? Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, Shri Harnath Singh Yadav. माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अंकित अपने नाम के सम्मुख तथा सूचीबद्ध कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 67वें, 68वें, 69वें और 70वें प्रतिवेदन के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। Statement of the department-related Parliament Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, Shri Harnath Singh Yadav. माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 62वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई दर्शाने वाले विवरणों की हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Shri Satish Chandra Dubey. मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख तथा उल्लिखित उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधित अस्थायी समिति के 39वें और 40वें प्रतिवेदन एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में सभा पटल पर रखता हूं। Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, Dr. Ashok Kumar Mittal. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy each of the 29th and 30th report
of the department-related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, as listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Labor, Textiles and Skill Development, Shri Neeraj Dangi. Thank you, Chairman, sir. I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Labor, Textiles and Skill Development, 53rd report on development and promotion of jute industry pertaining to the Ministry of Textiles, 54th report on schemes, programs of Central Silk Board for development and promotion of silk industry pertaining to the Ministry of Textiles, 55th report on development of cotton sector pertaining to the Ministry of Textiles, 56th report on implementation of skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion Sankalp project pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, 57th report on the action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in its 50th report, 17th Lok Sabha on welfare schemes and social security measures for textile workers in organized and unorganized sectors pertaining to the Ministry of Textiles, and 58th report on the action taken by the government on the observations, recommendations of the committee contained in its 49th report, 17th Lok Sabha on functioning of Directorate General of Training pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Thank you. Statements of the department-related Parliamentary Standing Committee on Labor, Textiles and Skill Development, Shri Neeraj Dangi. I rise to lay on the table a copy of each in English and Hindi of the following statements of the department-related Parliamentary Standing Committee on Labor, Textiles and Skill Development, statement showing further action taken by the government on the 35th report, 17th Lok Sabha on action taken by the government on the 33rd report, 17th Lok Sabha on implementation of National Apprenticeship Promotion Scheme, NAPS, National Apprenticeship Training Scheme, NATS, pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Education, Department of Higher Education. Statement showing further action taken by the government on 38th report, 17th Lok Sabha on action taken by government on the 30th report, 17th Lok Sabha on demands for grants 2022-23 of the Ministry of Labor and Employment. Statement showing further action taken by the government on 39th report, 17th Lok Sabha on action taken by government on the 31st report, 17th Lok Sabha on demands for grants 2022-23 of the Ministry of Textiles. Statement showing further action taken by the government on 44th report, 17th Lok Sabha on action taken by the government on the 36th report, 17th Lok Sabha on implementation of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, PMKVY, pertaining on the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Statement showing further action taken by the government on 45th report, 17th Lok Sabha on the action taken by the government on the 37th report, 17th Lok Sabha on the development of man-made fiber pertaining to the Ministry of Textiles, and statement showing further action taken by the government on the 47th report, 17th Lok Sabha on the action taken by the government on the 42nd report, 17th Lok Sabha on the demands for grants 2023-24 of the Ministry of Textiles. Thank you, sir. Reports of the Public Accounts Committee, Shri Shakti Singh Gohil, not present. Dr. Sudhanshu Trivedi. Sir, with your permission, I rise to lay the Hindi and English version of the report number 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, total 21 of the Public Accounts Committee 2023 to 24 as listed against my name in today's revised list of business. Statements of the department-related Parliamentary Standing Committee on Railways, Shri Narhari Amin. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरणों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को सभा पटल पर रखता हूं। Statements by ministers
श्री दानवे राव साहिब दादा राव। सभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला आयात प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता का मुद्दा 2022-23 के संबंध में विभाग संबंधी कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसदीय समिति के 37वें अर्थविष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य दे रहा हूँ। श्री वी मुरलीधरन। Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make a statement on behalf of my colleague Sri Ajay Bhatt regarding the status of implementation of recommendations contained in the 35th, 36th, 37th, and 38th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence relating to demands for grants, that is demand number 19, 20, 21, and 22 of the Ministry of Defence for the year 23-24. Honorable Leader of the Opposition. सर 2 तारीख फरवरी मैंने जो यहाँ पर चंद पॉइंट्स अपने भाषण में उठाए थे उसको रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, पहला जो मेरा रिमार्क्स एक्सपेंज हुआ है, कारण बताता हूं ना। If you will read what has been expunged, will not be appropriate. So you please indicate the premise of it. I am open to it. Please, I have gone through your communication. Please, sir. एक्सपेंज हुए हैं, मैंने उनमें किसी का भी नाम नहीं लिया, तो किसी भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट है, जो मेरे रिमार्क्स एक्सपेंज हुए हैं उसमें रूल्स के मुताबिक किसी भी पर्सन्स इन हाई अथॉरिटी के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया गया। रूल 238(5) ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा के एक्सप्लेनेशन में साफ साफ पर्सन्स इन हाई अथॉरिटी का मतलब लिखा गया है। अगर मैं आप इजाजत दे तो वो भी पढ़ूंगा। प्लीज सर, प्लीज। तो पढ़ूंगा। 238 ये रूल ए कहता है, नो एलिगेशन ऑफ ए डिफेमेटरी और इंक्रिमिनेटरी नेचर shall be made by a member against any other member or a member of the House unless the member making the allegation has given a previous intimation to the chairman and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigation into the matter of the purpose of reply, provided that the chairman may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is opinion that such allegations are derogatory to the dignity of the council or that no public interest is served by making such allegation. This is rule 238 और 5 में ये भी कहा है कि इस रूल्स के मुताबिक मैं reflect upon the conduct of a person in high authority unless discussion is based on substantive motion drawn in a proper terms. सब ये 238(5) सब क्लॉज के मुताबिक हो या 238(a) के मुताबिक हो, मैंने कभी इसका उल्लंघन नहीं किया। और दूसरा, जो भी ये पर्सन इन हाई अथॉरिटी का मतलब मैंने आपके सामने रखा है कि इस डेफिनेशन में कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से कवर नहीं होता, क्योंकि सदन में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई
भी सब्सटैंटिव one मोशन second. नहीं Sir. लाया गया। सर एक्सप्लेनेशन टू रूल 38 पढ़ते हैं एक बार। रूल 38 एक्सप्लेनेशन। नहीं, मैं बोलता हूँ फिर आपके बाद मैं आप कह दीजिए इसके मुताबिक ये है। तो मेरा कोई तीसरा पॉइंट ये है, तीसरे इसमें रूल्स के मुताबिक प्रियर नोटिस का भी कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि ना तो जिनकी बात हो रही थी वो इस हाउस के सदस्य है, और जो मैंने बोला वो बिल्कुल फैक्चुअल सिचुएशन पर बेस्ड था। मैंने जिस ट्वीट का जिक्र किया वो फैक्चुअली बिल्कुल सही है। बाद में स्पष्टीकरण जरूर आया, लेकिन मैंने जो भी बोला वो फैक्ट्स के आधार पर बोला। सर, राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव एक ऐसा मौका होता है जब हमें कई विषयों पर व्यापक चर्चा करने पर मौका मिलता है। तो मुझे लगा कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है तो ये मेरा कर्तव्य और हक है कि मैं इस मुद्दों को सदन में उठाऊं। मैंने बोलते हुए ना ही किसी मुख्यमंत्री का नाम लिया, ना ही किसी राज्य से उस राज्य का नाम लिया, उसका जिक्र भी नहीं किया। इसीलिए जो मेरे शब्दों को एक्सपंज किया गया उस पर मैं अपनी घोर आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं, और साथ ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की प्रोसीडिंग्स में इन रिमार्क्स को पुनर्स्थापित किया जाए और उन शब्दों को पूरे 2 पेज का आपने काट दिया साहब। 2 पेज का मेरा भाषण काटने के बाद उसका उद्देश्य अलग अलग होता है, क्योंकि मैंने परसों बोला 400 पार का आपने गड़बड़ किया। उसमें क्या हो गया कि लोग अरे बैठो भाई चुप सुनो, तो आपने क्या कहा, गड़बड़ शुरू हो गई। वो शब्द प्लीज नो, इस बार भी बोले वो आगे था, लेकिन आपने गड़बड़ में उसके सामने when the leader of the opposition is on his व्याधान legs, बोल के I लिखे। expect you can appreciate, but you cannot raise a disturbance. Please. No, nothing. Yes. तो साहब क्या होता है, ये अर्थ का अनर्थ होता है। तो जब अब गड़बड़ करके आप स्टॉप कर देते हो, आगे के शब्द को आप निकाल देते हो। आपने बोला इस तरीके से था। नहीं, वो आपकी है, आपके आगे मैं पढ़ूं, आपके आगे था क्या कि पूरा गड़बड़, क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यवस्थान क्या, व्यवधान, तो आपने लिखा उसके सामने, तो वो शब्द चले गया दूसरा। तो ये मैं कह रहा हूं कि इसके लिए पूरा देखिए 1:55 में मैंने अछूत शब्द का इस्तेमाल किया था, फिर 2 बार। सर वो मत पढ़िए, मैंने एक्सपेंस किया हुआ है। नहीं, अरे मैं तो वो मेरे को एक्सपेंस का ही होना है, मेरे को दूसरा नहीं है, मेरे को होना है एक्सपेंस का। देखिए 2 बजे ऑनवर्ड्स the expunged portion may not be read. But Achut sir has been held by unparliamentary. No. अरे एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान 17 आर्टिकल में है। खड़गे जी, आज मैं शीशे में 2 बार देख कर आया ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य मेरी तरफ ही देखें, क्योंकि उनको मेरे से ही देखकर बोलना है। तो आप भी इधर ही देखकर बोले सर। ओ आप ही के तरफ, आपको तो देखने के बाद मुझे खुशी होती है कि इतने सीनियर वकील सब आप है, इधर देखे तो हमको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। कभी कभी क्या होता है साहब, सत्य बात जब हम कहते हैं तो जरा आप उधर ही ज्यादा देखते हैं, उस वक्त आपको आकर्षण करने के लिए हमको कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। और 2 बजे 1:55 हुआ, 2 हो गया, और 2 बजे ऑनवर्ड्स उसमें भी आपने वो काट दिया, फिर 2:40 को आपने काट दिया। देखिए तो मैं ये
इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो हम कहना चाहते हैं उसको तोड़ मोड़ के अगर पढ़ेंगे लोग तो क्या होगा? अरे ये आपने जो चीजें बोली है इसमें नहीं है। मेरे को हर दफा हो रहा है, दिस इज द सेकंड और थर्ड टाइम माय स्पीचेस आर कट एंड दिस इज द लेटर आई हैव रिटन टू यू एंड मैं बाहर प्रेस को नहीं बोलना चाहता था अनलेस आई कैन ब्रिंग टू योर नोटिस। व्हाट इज दिस सर? एवरी टाइम। एंड यहाँ पर तो मनुस्मृति के बारे में इतना बोला गया है, इतनी चर्चा हो गई है, और मैं जब बोलता हूँ उसको निकाल देते हैं। व्हाट इज दिस? ये इसीलिए मैं कृपया करके आप उसको जो आपने निकाला है वो पूरे पेज को आप रख दीजिए, यही मेरी आपसे अपील है। Honorable members, we have unparliamentary expressions, a book from Lok Sabha Secretariat which says achut is unparliamentary, number one. Honorable members, I have received a communication, a written communication from Honorable Leader of the Opposition. I have gone through it. I'll give my ruling on it, but I may indicate to the House that his communication is in two parts. He has listed 4 items in particular. Item number 1 was relating to a word which was expunged because it is unparliamentary. The other 2, 3, 4 were recorded after I had said nothing will go on record. But I'll give my ruling. This matters because this is a platform where everyone has a free right of expression and in accordance with rules. Sir, I'll give my ruling on this. One second. Sir. Parliamentary, good. But there have been acts now. Not understand, the times change. When the times change, the law changes. Please, I am presenting to you. No, what do you want to say? Sir, untouchability, there has been act. It has been accepted legally as a terminology. Then please, it is for you. I want you to balance. It is for the chair or for the House to correct its book. 1 second. I would be too happy. 1 second. I will be too happy to revise unparliamentary expressions. And I may constitute a committee on that point so that senior members of the House and also young members, lest they take an offense at it, use that. We'll have an example. To the extent what the leader of the opposition has said, I will give my ruling on that. सर मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर 1 मिनट सुन ले, ज्यादा नहीं दूंगा। अंडर रूल सर शब्दों का निकाला जाना, अगर कोई शब्द आपको लगे कि वो अनपार्लियामेंट्री है तो आप उसे निकाल देंगे, लिख देंगे और कहेंगे ये कार्रवाई में नहीं होगा। लेकिन जिस तरह पेज बाय पेज 10-10 मिनट की स्पीचेस निकाली जा रही, सर ये कभी नहीं होता था राज्यसभा में। पार्लियामेंट में वो वर्ड निकाला जाता है, पूरा रेफरेंस नहीं। प्रमोद जी, leader of the opposition had very firmly, categorically put across his point. ठीक है। If you want my tentative response, have the book before you. Sir. Rule 238A proviso. And what does the proviso say? Provided that the chairman may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the council, not some individual, or that no public interest is served by making such allegation. Shri Kartikeya Sharma, matters raised with permission. Thank you, Chairman, sir.
for giving me this opportunity to speak on this important issue. This concern over refusal by hospitals to release dead We are not bodies having due a to discussion pending on bills. this. I have reserved my ruling. I'll come with it. The House will have the benefit of Sir, it. There I'll are have the benefit of it. saddening stories narrating the insensitive instances of refusal by a hospital to release the dead body to the family due to outstanding bills. Pramod ji, The grieved families already traumatized with the loss are subjected to further distress for immediate commercial recovery. A report by the Lancet Commission on the Nothing value will go of on death record. published Nothing in the will- year only that will go on record. 2022 states that Mr. in Sharma, situations where a family... Mr. Kartikeya Sharma, now start. Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on this important issue, which is concern over refusal by hospitals to release dead bodies due to pending bills. There are umpteen saddening stories narrating the insensitive instances of refusal by a hospital to release the dead body of the family due to outstanding bills. The grieved families, already traumatized with the loss, are subjected to further distress for immediate commercial recovery. A report by the Lancet Commission on the value of death published in the year 2022 states that in situation where a family is unable to pay hospital medical bills, hospital staff will often refuse to release the body of the deceased until the payment is made. The Geneva Convention and the UN Commission on Human Rights make it legally binding, provide for explicit provisions relating to the proper management, dignified treatment, and disposal of dead bodies, as well as respect for the need of families. Sir, earlier answering to my question, the Honorable Minister informed the House that there is no such legal provision authorizing any hospital to withhold dead bodies in the lieu of pending bills. Therefore, I urge this August House to deliberate on the situation that will bring some relief to the mourning families. I also request the Minister concerned to evaluate and issue guidelines for immediate release of the dead bodies and subsequent period for clearing the dues. Suggestively, penalties for the defaulting hospitals and that violate the said guidelines should also be incorporated for ensuring strict compliance. There is a growing consensus at international level that all patients must enjoy certain basic rights. In other words, the patient is entitled to a certain amount of protection to be ensured by physicians, healthcare providers, and the state, which have been codified in the various societies and countries in the form of charters of patients' rights. The patient rights charters, as approved by the National Council of Clinical Establishments, is available in public domain and needs to be promoted in good spirit. Further, we can collectively implement a few steps. Spread awareness about the Patient's Rights Charter and the rights that families of the deceased have in such situations. The Patient Rights Charter enlists 17 rights of patients, including the right to information, whereby every patient has a right to adequate relevant information about the disease, right to record in reports, the right to emergency medical care, the right to informed consent, the right to confidentiality, the right to second opinion, the right to discharge of patients or receive the body of deceased from the hospital and more. Enforce hospitals to display the charter in important areas of the hospital so that accountability is held. Treat violation of the charter with firm laws, as non-release of dead bodies is treated akin to violations of habeas corpus. Create a national helpline to assist the mourning families in such unfortunate times, and create a national corpus fund. Sir, and more importantly, let's incentivize the hospitals and doctors to a community so that they encourage and follow the Patient Rights Charter. Thank you very much, sir. Shri Pramod Tiwari. Shri Pramod Tiwari. सब एक मिनट मैंने वो उठाया और आपको कहा भी इसमें अनपार्लियामेंट्री क्या है और सारी चीजें Sir, I have reserved it. You have had your say. नहीं रिजर्व with तो utmost साहब respect. रिजर्व के बाद ही आप अर्जन करने वाले नहीं, हैं नहीं, sir. कहाँ रूलिंग होगा No, you will have it during the course of the day. अब तक तो During course of the day, before I rise for the day, you will have a ruling perfect on this. काइंडली Come on, Pramod Tiwari, you want to avail the opportunity? 2 बजे के ऑनवर्ड्स में जो भाषण हुआ 110 pages Nothing पे will go on record, sir. ये kindly- I gave you opportunity. Sir, sir, how many times I will see it? I have read it. You have sent a communication. I have gone through it. I have heard everyone carefully. I'll give a ruling on it. Shri Pramod Tiwari. सर मैं मॉर्निंग आज ही अर्ली मॉर्निंग आज ही करेंगे आई हर्ड अर्ली मॉर्निंग चलो Sir, we'll change it.
मैं आज एक I'll correct if there is an error. मैं I'll एक look into अत्यंत it. सर अब शुरू होगा ना मेरा 3 मिनट. Your time starts now, Mr. Pramod Tiwari. Thank you, sir, for wishing me. सर, मैं एक महत्वपूर्ण विषय को उठा रहा हूं कि राजनीति का एक धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए. मौजूदा हालात में चिंता व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं, आज हम अपने देश में धर्म के राजनीतिकीकरण के उल्लेखनीय वृद्धि देख रहे हैं और ये हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए घातक खतरा पैदा करता है. एक देश के रूप में हमने हमेशा दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया. हमारे धर्म ने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई है और ये हमारा संवैधानिक, धार्मिक और व्यक्तिगत दायित्व है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे पूर्वजों ने जो धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता का संदेश दिया है, समानता का संदेश दिया है, उसे कायम रखा जाए और उसका पालन किया जाए. हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास में धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और एकता की अपनी सदियों पुरानी संपत्ति को दांव पर न लगाएं. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस मुद्दे को हल करने के लिए एक देश के रूप में मिलकर काम करें और एक बार दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का वास्तविक अर्थ समझाएं. जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो राष्ट्र प्रथम होता है, दल द्वितीय होते हैं. आज मैं देख रहा हूं कि अपने दल के हित को साधने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. बहुत से लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है. अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही अगर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह अपने पार्टी के हित में करेंगे तो निसंदेह देश के लिए घातक होगा. मैं अपनी चिंता व्यक्त करते हुए आपसे चाहता हूं कि आप निर्देशित करें कि संविधान के विरुद्ध धर्मनिरपेक्षता और पंथनिरपेक्षता पे लोग कायम रहें, धर्म का दुरुपयोग न करें. गांधी का MP-led guidelines. मारी हिरण कडाली. धन्यवाद उपसभापति महोदय. संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को 1993 में शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से संसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों आदि को क्षेत्र में सामुदायिक संपत्ति के निर्माण हेतु विकास कार्य की सिफारिश कर सकते हैं. वर्तमान में इस योजना के दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 5.2.11 को अंतर्गत धार्मिक प्रकृति को कार्य या धार्मिक पूजा को स्थानों, परिसरों को भीतर और धार्मिक आस्था समूह से संबंधित या स्वामित्व वाली भूमि पर होने वाली कार्यों के लिए इस निधि के प्रयोग में अनुमति नहीं है. हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मठ और मंदिर में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें हवन, भजन, कीर्तन और विवाह जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी शामिल है. संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए निधि देने का प्रावधान है, लेकिन पर्याप्त भूमि के अभाव के कारण कोई अवसरों पर सामुदायिक केंद्र का निर्माण नहीं हो पाता. धार्मिक पूजा स्थलों पर पर्याप्त भूमि होती है, लेकिन संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रतिबंध के कारण संसद अपने क्षेत्रों के धार्मिक स्थलों का विकास और उनके परिसर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण नहीं कर पाते. मेरा सरकार से निवेदन है कि दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 5.2.11 को निरस्त किया जाए और धार्मिक स्थल जैसे मंदिर और मठों में सामुदायिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक केंद्र और अन्य विकास कार्यों के लिए संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से निधि देने पर लगे हुए प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए. नमस्कार.
धन्यवाद कटारी जी. माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण, डिमांड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिकंदराबाद कैंटोनमेंट एरिया. Thank you, Deputy Chairman, sir. This special mention is regarding the merger of Secunderabad Cantonment Board with the local Municipal Corporation of Hyderabad, sir. Sir, Secunderabad Cantonment Board covers a vast expanse of 40.13 square kilometers located in the heart of Hyderabad, a prime location, sir. It is widely recognized as a lung space of Hyderabad. But recently, the demand has been arisen for merger of this SCB into Greater Hyderabad Municipal Corporations. Thus, SCB has a high proportion of B2 land, sir, constituting approximately 30% of the land composition. B2 lands primarily comprise private lands and state government lands. And over a time period, number of colonies and bastis have come up, and nearly 3 lakh population are residing in this cantonment board, sir. Sir, this as urbanization progresses rapidly, the population within the cantonment limit has witnessed significant growth, necessitating urgent focus on addressing civil infrastructure within the cantonment area, sir. It is worth noting that the participation of the then TRS government in terms of infrastructure development, extending grants and aid was negligible, and it was totally now neglected by the then government, placing the entire burden on the SCB administration, sir. So the residents of cantonment consistently express the need for improved civic amenities. Cantonment board diligently pursues us whenever funds become available. According to the complexity of the situation, road closures enforced by the army and local military have exacerbated the issues and grievances, sir. So the demand for merging in board with the GHMC was raised by the then party ruling. It was totally a politically motivated, sir. The main hidden agenda behind is the open lands and the surplus lands left in the cantonment board. So they are being designated as the green spaces for Hyderabad. The availability of surplus lands such as OGB, B3, B4 category lands within the SB cantonment provides unique features, sir. The politically motivated conspiracy behind this is to grab that open lands. So now what I request is the main demand of the local residents to increase the Thank you. FSI. आपका समय हो Sir, गया. I only request the government of India to Dr. K. Lakshman, it's not going on record now. Sri GVL Narasimha Rao demand for investment of around 500 crores for installing infrastructure for filtering of sewage water in Visakhapatnam city. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Sir, I'm happy to say that as a resident of Visakhapatnam, there is something to be very proud of. Visakhapatnam is one of the cleanest cities in the country as per Swachh Survections. In the last 3 years, it has ranked 4th every time. I would like to thank, first of all, Honorable Prime Minister and the central government for giving huge funds under various central schemes like Swachh Bharat, Amrit, Swachh Smart Cities Mission, G20 City, and many other ways. I think when the city was ravaged by Hudhud, it was central government and Honorable Prime Minister Modi ji who stood by the city. So there is so much to be proud of about Visakhapatnam. But there is also a concern, a rising concern about the high level of ocean pollution, which is possibly not evident to the public, but it has a huge negative adverse implications for the future. So some statistics, as per Parliament reply given to me in Rajya Sabha, Vizag's coastline, Visakhapatnam's coastline has receded 3.5 kilometers, which is 22% of the total coastal length in the last 30 years. And also there is reduced availability of marine life for the fishermen who go for livelihoods. This is all happening because of the development of a dead zone in the city, which results in death of ocean life. So
this pollution is caused by more than 20 drainage canals which directly flow into the city without being treated. This untreated sewage water is creating a lot of, it's not only making the some parts of the beach, some parts of the coastline ugly, it is also impinging on the health of fishermen who live on the coastal line. It is killing the marine life. Therefore, I call upon the honorable, I call upon the central government to assist the city of Visakhapatnam by formulating any project and to help the state government some kind of a financial assistance over a long-term basis with an investment of close to 500 crores to make this city survive in the longer run, to help the coastal line to remain alive, and also help fishermen in their livelihoods. The blue economy of Visakhapatnam is dependent on this factor, and I call upon the central government to assist, and I call upon the state government to get into action. Thank you. Not to really sleep over it and to understand the dangers of. सिंह तोमर, माननीय विजयपाल सिंह तोमर। धन्यवाद उपसभापति महोदय। महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के गठन के पश्चात पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, और इसका कारण है जब रोजगार सृजन होता है तो गरीबी उन्मूलन तीव्रता से बढ़ता है। इस उपलब्धि में बड़ा योगदान देश में बड़ी संख्या में रोजगार सृजन का है। केंद्र सरकार ने इसके लिए मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, देश में औद्योगिक माहौल बेहतर करना, कृषि क्षेत्र में सुधार जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महोदय, प्रधानमंत्री जी स्वयं हर रोजगार सृजन के कार्यक्रम में रुचि लेते हुए प्रति माह 70,000 से लगाकर 1 लाख नियुक्ति पत्र युवक युवतियों को देते हैं। रोजगार देने के कार्यक्रम में तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश में रोजगार कार्यालयों का बड़ा योगदान है। गत माह मैंने भी ग्रामीण क्षेत्रों में 2 रोजगार मेले आयोजित किए, जिनमें एक में 14 और एक में 18 कंपनियां आई, और कंपनी भी अच्छी, जैसे एयरटेल है, आईसीआई बैंक है, श्री राम पिस्टल है, और उनमें 700 से अधिक युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मेरा विचार है देश के विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज और प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय एकीकृत बैंक द्वारा स्थापित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का इसमें महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। देश में नवयुवकों और युवतियों को रोजगार मिले तो देश के उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में भी तीव्रता आएगी। महोदय, देश के विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान में अनिवार्य रूप से प्लेसमेंट सेल की यदि स्थापना की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से चाहूँगा कि ये सब संस्थान, चाहे विश्वविद्यालय हों, डिग्री कॉलेज हों या प्रशिक्षण संस्थान हों, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्थापित किए गए हैं, प्रत्येक माह एक रोजगार मेले का आयोजन करें और उसमें युवक और युवतियों को ताकि रोजगार मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी। माननीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, माननीय उपसभापति जी, ई फाइलिंग सेंटर की स्थापना का मेरा विषय है। आपदा में अवसर कोरोना काल में वर्चुअल पद्धति निकल कर आई। 4,20,930 केस सुप्रीम कोर्ट में 2.63 करोड़ जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में सुने गए। वादकारी का हित सर्वोच्च और सस्ता और सुलभ न्याय सरकार का सिद्धांत। 9 मार्च 2023 को न्याय मंत्रालय, भारत सरकार का एक पत्र सभी हाई कोर्टों को गया ई फाइलिंग के संबंध में। कर्नाटक, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिक्किम, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुवाहाटी का उत्तर अनुकूल आया। भारत सरकार ने 7100 करोड़ रुपए बजट में व्यवस्था की 4400 ई फाइलिंग सेंटर स्थापित करने के लिए। उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और तेलंगाना में सुविधा प्रारंभ है। 25 हाई कोर्टों में 689 केंद्र चल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिटीशन संख्या में 6 अक्टूबर 2023 को कहा है कि आफ्टर ए लैप्स ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर, no high court shall deny the access to video conferencing facility or hearing through the hybrid mode to any member of the bar or litigant desirous availing to such facility. उच्च न्यायालय प्रयागराज ने भी अपने पत्र संख्या 18 अक्टूबर 2023 को जिला न्यायालयों को आदेश जारी करके 1 नवंबर 2023 से ई फाइलिंग सेंटर शुरू करने का आदेश दिया। मेरठ में उस क्रम में 25 अक्टूबर को 1 नवंबर से ई फाइलिंग सेंटर चलेगा, ये आदेश भी हो गया। लेकिन अचानक रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्र संख्या 3542 सीपीसी ई कोर्ट दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को कैप्टन अबाइंस लिखकर उस हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, भारत सरकार ने उसके अधीन पत्र लिखा था, तमाम उच्च न्यायालयों ने उसमें सहमति दी है, उच्च न्यायालयों में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली उच्च न्यायालय तेलंगाना में हुआ, करोड़ों केस सुने गए कोरोना काल में। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि 6 अक्टूबर 2023 के 15 दिन बाद कोई कोर्ट, हाई कोर्ट मना नहीं कर सकेगा, यह स्थगन उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। इस दृष्टि से मैं सदन के समक्ष रखकर भारत सरकार से न्याय मांगना चाहता हूं। धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी जी। माननीय श्री नागेंद्र राय, demand to include the history of Rajbansis and Kamatapur in NCERT textbooks. Sir, I demand to include the history of Rajbangshi and Kamatapur in the NCERT textbook. The Rajbangshi community has a rich and heritage and culture which has been inherited from the ancient civilization. The Rajbangshi community is their own dialect, culture, and way of the living. The culture reflects the humbleness, peace, and harmony with nature. His Highness Maharaja Jagadevendranath Bahadur was the last Maharaja and the greatest warrior beside the Bir Sujya Vishwa Mahavir Chilarai, the younger brother of Maharaja Naranarayan. Naranarayan was the greatest hero in the world. In December 1950, President of the Greater Kujbar People's Association had requested the Government of India in conclusion of the glorious history of the Rajbangshi and Kamatapur in the NCERT textbook for the benefit of the student, linguists, and benefit community. In reply to this, in assurance was the given, then that is the matter would be placed before the textbook development committee of still now. History of Rajbangshi was not published. The great leader of Rajbangshi, their love, affection, the development for the people need to reach on the present and future generation so as to under the Indian history. I therefore request the central government to include the contribution, the Rajbangshi and Kamatapur in the textbook of the NCERT. Thank you. Thank you, Sri Nagendra Rai ji. Mani M. Sanmugam, concern over delay in increasing minimum monthly pension of EPF pension to ₹9,000. Thank you, Chairman, sir. I raise to concern over the delay in increasing minimum monthly pension of workers under Employees Provident Pension Scheme. Sir, huge amount is lying with the Ministry of Finance as unclaimed amount. As many workers shift from one company to another, their EPF contribution remain unclaimed. This is the position up to the year of 2014. In 2014, Universal Account Card was introduced with the result. The employees workers continue to get the EPF subscription irrespective of the change from one company to another. And the corpus fund of the pensioners who expired between 95 to 24 is also there. The government should merge corpus fund lying with the government department and unclaimed amount to enhance pension fund under the EPF scheme. I demand that the government should enhance immediately the minimum monthly pension under EPF scheme to ₹9,000 as demanded by various trade unions. Hence, the amount from corpus fund and the unclaimed amount which belong to the workers should be merged with the pension fund for the purpose of EPF scheme so that the actuary valuation will go up. Similarly, the formula for calculation of EPF pension does not reflect the reality like actuary and the funds lying with it, which is prejudicial and to the pensioners. Therefore, the calculation formula should be revised in the favor of pensioners. For giving higher pension under the EPF pension scheme for those who contribute more money, the existing formula calculation pension will not work
and therefore it needs to be revisited and revised. I would therefore demand that government should call a meeting of Central Trade Union for consultation so that the viable formula may be worked out for calculating the pension under EPF pension scheme. Thank you. sir. Thank you, Shanmugan ji. Dr. Amar Patnaik ji, demand to include Ho, Sambalpuri, Saroa and Mundari languages. in Thank you, LCD. sir. Sir, Odisha occupies a very special position in the tribal map of India with 62 ST communities and 13 primitive tribes. They constitute 22.43% of the total state population. With this, Odisha has one of the highest percentages of tribals in India. So there is a long-standing demand of the Odisha government to include Ho, Mundari, Bhumish, Kui and Saura languages in the 8th schedule of the Constitution. The exclusion of these languages denies tribal linguistic communities access to education in their native tongue, perpetuating their marginalization. For instance, the Ho language spoken by approximately 10 lakh tribals in Odisha and Jharkhand, and Mundari language spoken by over 6 lakh people of Odisha and Mundari tribes are deserving candidates for constitutional recognition. So Honorable CM Naveen Patnaik, Odisha CM Naveen Patnaik had written a letter to the Union government in 2014 in this regard. However, the demand remains unheard. The incorporation of these languages into the 8th schedule will contribute significantly to their preservation and dissemination. This inclusion will catalyze various initiatives such as publication, content creation, and will also establish an ecosystem of conducive to research and studies focused on their preservation and promotion, fostering a robust platform for scholarly engagement in these areas. Sir, moreover, on September 16, 2022, Honorable Chief Minister Naveen Patnaik ji had also written a letter to the Union Tribal Affairs Ministry, reiterating their long-standing demand for inclusion of 169 communities in the state's scheduled tribe list. In December 22, again a delegation of BJD MPs met the Union Tribal Affairs Minister and demanded inclusion of all the 169 tribal communities of Orissa in the list. However, despite the state government and Honorable CM's persistent requests and demands, not all the tribal communities have been included in the Constitution, Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders 2024 passed in the Rajya Sabha yesterday. Only 53 have been included out of 169, which had fulfilled all the conditions and all the processes. For the remaining tribes, Honorable CM has been impressing on having joint meetings of all the involved ministries and state government to expedite the process. Even after the prioritization of 9 proposals by a Ministry of Tribal Affairs task force in 2014, many recommendations remain unaddressed. Thank you. Sir, Orissa has already taken Thank you, initiative in this Patnaik ji. regard by constituting special Your time is development over. councils. Thank you. माननीय श्री विप्लव कुमार देव, माननीय विप्लव कुमार देव जी. Thank you. महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय नगर विमान मंत्रालय के अवगत करना चाहता हूं कि एमबीबी हवाई अड्डा अगरतला त्रिपुरा भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। वहां नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन 4/1/2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां व्यस्त घंटे के दौरान 1000 अंतर्राज्यीय और 200 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संभालने की क्षमता है। 20 चेक इन काउंटर है एवं 3 मिलियन यात्रियों को वार्षिक क्षमता है। अगरतला चिटागांग मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का संचालन शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने 18.85 करोड़ रुपए की राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भुगतान कर दिया है। वह इंस्ट्रूमेंट